my God, this is so easy. Let me just cover my head like that. What is the problem with that? It is not your business. It is nobody's business. It is nobody's business. If it is not even a religious practice, even then it is not a business, because in this country, every other day, we see people advocating for women wearing bikini on the streets. Bikini is in every conversation, but the headscarf is in no conversation. Who decides that women only feel empowered by wearing bikini on the roads? Why can't women feel empowered like this? I feel very empowered. There is no change in my intellect, in my agency, in my thought process with a headscarf on my head. This is the point that I have wanted to make for so long. Thank you for giving me this opportunity to make this point. I will just take 2 more minutes. Just 2 minutes. This was a very important point that I wanted to reiterate. Bashir sir also talked about the anti-CA movement and how students protested and there was students united in that sense. But today when I look at a young student leader who was thrown off the roof of his house in the middle of the night in Kolkata, in a so-called progressive state of India, which is supposed to be the beacon of democracy and secularism, and I see silence on it, it makes me lose faith in the student resistance. Today, when all of you students and so many student leaders are here and so many student leaders are going to speak here, I saw so many posters, please, when you ask them, when they come here and sit here and they share their opinions with you, do ask them, who killed Anis Khan? That is the question that students need to be asking in this country right now. Thank you, Safura. So I'll just summarize what she said. She started with the power of student resistance and her own example and the example of the students in and around Delhi universities, Jamia, and the other institutions. Then she spoke about the representation, which is one of the most important facet, the empowerment of women. Then she spoke about the fact that you have to be unapologetic about our Muslim identity. She said being Muslim is being Indian, and there should not be any interference in my religious practice by anybody, including the government or the executive. And we have to fight for our rights, resist for a hate-free world, resist for the future generation. And according to her, the hijab is actually a Hindutva hate project. Thank you very much. Now we go into the second round of our discussion. The second round is, what is the solution? Where are we heading to? We spoke about the problems in the first round, and now we have to find a solution for this. And where are we heading to? And I don't want to be pessimistic. I am always optimistic. Because this country is governed by rule of law. This country has got a beautiful constitution, and the constitutional rights has to be enforced. The guaranteed rights have to be enforced. We have got a very strong judiciary. So therefore, in the second round, on a solution as to how we have to resist this, I'm going to be, according to me, it has to be on a very, very positive side, an optimistic side. And judiciary, according to me, is one important straw in all these things. And we have seen how the judiciary has changed now, particularly in the last 8 to 10 months after the new Chief Justice have taken over. Bashir Sahib has spoken about judgment on sedition. We have seen how the Pegasus case has gone. We have seen how the normal argument of the government about the national security, that if it is a case involving national security, then we don't even have to give reasons. That also has been thrown away by the Supreme Court in the Pegasus judgment. So there is another very interesting case of Media One TV, which has been banned. The litigation is going on, where again the central government's argument is about national security, and therefore we don't need to give any reasons. The judgment is going to come day after tomorrow from the Kerala High Court. Let's hope that some better judgment comes in that case also. So therefore the judiciary has to do its duty, and judiciary has to enforce the constitutional and fundamental rights guaranteed to its citizens. So on this optimistic note, I request Ashi Qureshi to give her comments on what should be the solution to this and where are we heading to. Hi. So as a journalist, I would just speak on my media part because that's what I represent. So where we are heading to.
honestly, as a Muslim journalist and as I have worked in various organizations, so I started honestly to begin with, I started with a very right-wing organization, Republic TV. Many people who meet me for the first time, they just do not believe that I work for Republic TV because that was my first job. From there, I learned how certain things are manipulated, how certain news is manipulated to appease a certain section of the society, which is of course is the majoritarian society. From there I learned, like I was asked to
in their heads. The Islamophobia is ingrained in their heads, and now it's out in open. So just talk to them. So like even if we talk about like this, even a small things which with happen, like whatever happens with Muslims, like in the auctioning app. So in the recent bullying by case, even I was one of the women who was auctioned. Like when I woke up in the morning, I saw my name over there. Like I couldn't even tell my family about it. I mean, I should have told my family about that. I'm being like, this is how the Hindutva right wing has auctioned me off. But I couldn't tell them. But after 2-3 days after that numbing experience, I realized that how can I stay silent about it? My family needs to know. See, when your family even doesn't support you in certain times, these are the times when your family doesn't support you. You feel like, how should I just go out? But then you need to speak about it. Whether it's Clubhouse, whether it's your Instagram, where they make certain pages and abuse Muslim women or abuse Muslims, and there's no action against them. I think we all should come together, each and every person, and start speaking. That's when we'll be able to stop it. That's where we will be heading. Thank you. We're running out of time. The organizers told me that the session had to wind up at 4:30. We are almost 10 minutes past 4:30. Plus, Safura and Bashir Sahib had to leave by 5 o'clock. And they also told me that there are many questions. So instead of going to each panelist, I think I have to throw open this to the audience so that we can take some questions at least. Assalamu alaikum. So I'm Tausif Hussain. I belong to the eastern part of this nation, deep into that jungle area, whereas the words of probably 18th of February 1983, where we are talking about rights and resistance. Probably India had witnessed a lot of riots. I would like to recall an incident in Assam that has been forgotten and buried deep under the sand. That is the Nelly riots. I'm sorry, it's not a riot, it's massacre. Riots is something like where you have a resistance. And there was no resistance. And within 2 hours on 18th of February 1983, more than 10,000 people have been killed. And all of them are Muslims. And it was done by the government machinery. Till today, neither the rights nor resistance have been made. And no justice has been done to those people. There was nothing. So my thing is that just now our respected journalists have told about genocides. So what is heading towards is not that it had headed before in Assam. What we have witnessed. Yeah, this is the question. Okay. Just frame your question. So now my thing is that how do we change the course of this kind of situations, and how do we get judgment to such situations where the rights have been violated and there were no resistance, and till today the judgment is awaiting. Thank you. The question is directed to whom? as a moderator, I don't think. But yeah, we'll take certain more questions, because then we can answer if it is a collective. Thank you very much, Harisa. I have actually two questions. One is for Dr. Khan. Dr. Khan has talked about the proportional representation. And while you talked about it, you said proportional representation. I believe it is about the proportional representation in the politics, in the parliament, of the various communities. You did talk about religion. You said cultural representation, community representation. Does it mean proportional representation in the electoral system, or did you mean anything else? So please elaborate. The other question, let me finish with, is with Zafura. She mentioned about women being part of politics. I belong to Indian Union Muslim League, which is identity politics, but I want to understand from a younger version of mine, Zafura, which I had similar thinkings when I was at your age maybe, but things changed. So what kind of politics the women should do? Is it identity politics you are talking about? The so-called secular politics you are talking about? Or
do you mean something else entirely? Thank you very much. Since you have the mic in. Yeah, am I audible? When we don't ask what kind of politics a man has to do, do we ask whether a man will be doing identity politics or electoral politics or any kind of politics? Why is this question always for Muslim women? In those terms, I included myself into that what kind of, I do a certain kind of politics. I want to understand what you think about that and how we should go on with this, or what you want, or any younger person, what they want today. Politics is not compartmentalized. For me, I have done activism. All kind of politics is open for me. We need political consciousness in India, and it should not be compartmentalized. Only this person will speak about this issue or do this kind of politics is something that is very problematic. You should have the floor open. I also believe that the Muslim community must talk about electoral politics. In the state of Uttar Pradesh, today there is nobody talking about Muslim issues. That is because Muslims have not persevered in the electoral politics in India, because they've always been told that you will not be seen secular enough, or why should Muslims? There are so many things that that you are told, that Muslims have become a social pariah. I did a report on UP recently in which I wanted to highlight the kind of persecution of Muslim anti-CA protesters that has happened in UP in the in the 2 years, in the past 2 years. We realized that more than 350 FIRs were released, were filed, and more than 1 lakh people were arraigned. Unnamed people. Now, those 1 lakh unnamed people are still out there, and the police is still on a witch hunt, and that's what is always on anybody's head. Any Muslim in Uttar Pradesh to be arraigned in that FIR. That's a big news. But, people will advise you, oh, don't release this report in the times of, in election. Election will get polarized. Me talking about my oppression is going to polarize the election. Oppressors sitting in power does not mean polarization. And it is already polarized. You are further polarizing it. If you stop talking about it and even get a short-term electoral gain, you have only perpetuated the politics of deep state that has already been going on in India at a very slow place of segregating Muslims and pushing them out of participatory democracy, electoral politics, and also some sections of the allies pushing you towards representational politics. All kinds of politics is our politics. Also, as far as the majority is concerned, as just like the majority has the political sphere open for them, unapologetically, it should be open for us also. I think that answers your question. Kalikan sir. Yes. Hello. So No, myself. please, because he has to answer. No, actually, maybe I missed the religious community, but the 2 articles which I referred, that was on Muslims representation. Basically, this was in the context of CA and triple talaq. Representation in parliament or not? That is what he's asking. Representation in parliament itself. Because ultimately any bill or anything that will be voted by the representatives in the parliament, and in the present system, what is happening, if someone, a Muslim, if he or she is representing a community and coming from a so-called mainstream party, they are representing not the community they are coming from, they are representing the party. And if I try to define representation, it includes two things: representation of the person and representation of opinion. If even there are discrimination in distribution of tickets also in mainstream parties, but even if someone wins from a so-called mainstream party, I think that person will not be able to vote in favor of the community. And the simple reason is that the chance of victory in election depends not only on the votes of their community, but also on the vote of the other community, particularly the majority community.
And second thing, again I will quote the same article. If you see the manifesto of Congress and BJP in 2019, you'll find that, if I correctly remember, BJP mentioned the issue of Muslim community 2 times in its manifesto, and Congress mentioned once. I'm not particular about Congress, I'm giving just an example. Why did this happen? This happened because the right-wing forces, they created a kind of majority, a kind of narrative during the post-structure period when the UPA 1 and UPA 2 government tried to address some issues of Muslim community. Right-wing forces, they used these kinds of policies and programs to convince the majority community. See, the Congress and other secular parties, they are appeasing Muslims, and due to this, they were trapped into the trade-off. If they are addressing the issue of Muslim in their manifesto, they will lose majority votes, and if they are not addressing the issues of Muslims, they will lose minority vote. Now, this very let's say this rhetoric defeating BJP. This is the only rhetoric on the basis of which this so-called mainstream party ask the minority communities, particularly Muslims, to vote for them. In fact, there is a positive side of this also, particularly for parties coming from the community. If we see the growth of Muslim parties during the era of formation of these parties, more than dozens of parties were created during the post-structure committee report, and except MIM and IUML, it was created long before. So the rise of Muslim party itself is a post-structure phenomenon, and by ignoring the issues related to Muslims, all the so-called mainstream parties, they left vast ground open for these Muslim-led parties to address the issue of Muslim community. And if I try to interpret the election result of Bihar, MIM won 5 seats. If you go through the speeches of Owaisi and other Congress and RJD leaders, you will find that Owaisi targeted NRC and CA. He criticized these two issues heavily, and this resulted into 5 seats in Bihar Assembly election. So I think there is a positive side also, and there is a scope for Muslim-led parties to grow in future. Thank you. Thank you. Yes, sir. मेरा सवाल आपसे है मेरे सर बशीर सर से है सर सवाल. Sir, I am talking about the structure committee. All problems are mentioned in this report, more than 800 pages, I think so. But why this structure committee report is not open? And what is the solution of problems of Muslims? How you can tackle them according to the structure committee? Madam? What is the use of structure committee? Madam, please introduce yourself. My name is T.N. Bharti. I am a journalist from New Delhi. I am fully agreement with you because your question is significant. We had a lot of commissions, committee reports, and still the things have not progressed up to our expectation. But one thing is sure, at least that's a basic document which proves the backwardness of the minorities. We are using that, but from the government side, I feel that consulting have not taken place in this. But through our organized efforts, we have to raise our voice, taking this as a basic document. The purpose can be served on that way. See, such committees have made certain findings at the recommendation. At the same time,
Ranganath Mishra Commission report have suggested the remedial action. They have not even presented that. A Sacha committee is like a doctor's prescription. Similar, at the same time, the other thing is, Ranganath Mishra Commission is the medicine. Unfortunately, they have not even presented that in the parliament. That is the thing. So what I am saying in brief is, use this as a basic document to substantiate your argument and then go ahead. Only that much. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर अब्बास है और मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट यूनियन लीडर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब हमारे देश का संविधान लिखा जा चुका है और उसके बाद कोई इंस्टीट्यूट या कोई संगठन शांति व्यवस्था के नाम पे या कानून व्यवस्था के नाम पे कोई ऐसा कानून या नियम बना दे जो हमारे देश के संविधान को काट रहा हो और वो हमारे सामने पास हो रहा है, लोग गाँव में हैं, शहर में अलग अलग जगह है, तो उस वक्त पर अगर हम संगठित हैं, हम संगठन है, तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम अकेले हैं तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? अगर ऐसा कानून या नियम बन रहा है तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? दो चीज़ है। एक तो आपको लीगल वे है, जुडिशरी है। अगर एक कानून ऐसे वाला अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल कानून जैसे आपने बोला है, ऐसे तो कोई बनाया है, तो एक स्ट्रेट चीज़ ये है कि आप कानून जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाकर उसको तो इलीगल कहवा दो कोर्ट से। दूसरा है प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। तो ये दोनों चीज तो साइमल्टेनियसली होना चाहिए और यही करना चाहिए। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? माइक जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि कर्नाटक की हाई कोर्ट ने जो हिजाब के मामले पर कुछ रोज के लिए फैसले को महफूज कर लिया, हिजाब के मामले पर, इसका क्या होता है कि जैसे नरम और गरम बहस चल रही थी इस मुद्दे पर, इसका क्या होता है कि कोर्ट वगैरह काफी दिन के लिए फैसला महफूज कर लेती है? मेरा नाम शहजाद बदरी है। एक हफ्ते के लिए आप वेट करो, जजमेंट आ जाएगा, तब हम डिस्कस करेंगे। Excuse me. Yeah, my question is to Safura Zargar. Yeah, I was wondering, with reference to your unapologetically being Muslim, so I wanted to ask you, in Karnataka, when Bibi Muskan raised Allahu Akbar against Jai Shri Ram, so there are many organizations which have a record of, disregarding constitution. They are weaponizing Allahu Akbar. So it clears the ground for right-wing Hindu groups to polarize Hindu votes. So what's your take on this? Introduce yourself. My name is Mukaddas. I am a student of IIM, Indore. Thank you for this question. It is a very important question. There are multiple opinions about it. I am of the opinion that what the others are doing should not be the basis of your actions. Right? The fact that Allahu Akbar, which just means God is great, is being weaponized is the problem. We are thinking that it will be weaponized, so let's not use it, but we are not addressing why it is weaponized. And where have we come to in this situation in time where a simple religious slogan, which is a matter of faith, is weaponized? This is what I was talking about when I was talking about allyship, when I was talking about being unapologetic. See, all of this that has come out about, specific questions to Muslims which are not asked to other communities is an ingrained Islamophobia that of course India is also facing, the world is also facing, but in India we have an alarming situation right now, and as Arshi was also saying that I don't mean to be hopeless, but there needs to be caution about genocide, because genocide did not happen on a stage. It was not an event. And we were not sitting and watching it happen and tapping or clapping about it. Genocide was a process. Recently Genocide Watch said that we are on the 8th or the 9th stage of genocide. Gregory Stanton said that. And the last stage of extermination might well even happen. So this is a caution, and I don't mean to be hopeless. I just mean to awaken your spirits when I say that, we are faced with an alarming situation and we need to resist. We need to form solidarities. We need to organize. It's very important. Any other questions? Yes, sir.
My name is Saitu Muhammad. I am from Pondicherry University. My question is regarding law. As Ms. Safura Sarkar ma'am already told that one of the Hindutva project which is now going on is the hijab ban regarding itself. So while hearing, the hearing has closed right now, while hearing the Advocate General argued that the hijab is not an essential religious practice, ERP. So my question is that how an ERP, how an act in a religion is considered as an essential religious practice? That's my question, sir. Thank you. So that is why I said in my opening remarks itself that this is not court's business. The court is not a theological court. This is a constitutional court. Only a theological court or a Maulvi who is an expert in the subject will be able to say this. Who is an expert in Quran will be able to say this. So therefore, that is the reason why I said the court had to abstain or restrain from interpreting what is an essential religious practice. And that is what even Safura was saying, that this is none of their business as to what I am going to wear. It might be essential in my viewpoint, it may not be essential in somebody else's viewpoint. Therefore, the court has to lay its hands off this particular matter, particularly the religious practices and what are the essential religious practices. And Tausif, I am just answering you. The genocide which you mentioned is because of the constitutional institutions coming together and not protecting the rights. Otherwise, it is the government-sponsored acts of terrorism, we can call. But the genocide is constitutional institutions' collective failure. Excuse me. Excuse me, sir. I'm Sheikh Farhat from Maharashtra. Sir, I have a little question. जैसे सफूरा मैम ने बताया कि उन्होंने अपने राइट्स के लिए, अपने नहीं सबके राइट्स के लिए अगर आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर यूएपीए का जो है एक्ट लागू कर दिया जाता है, ठीक है? लेकिन वही चीज अगर कोई सांसद या किसी ने, जैसे जेनोसाइड के बारे में मैम ने अभी बताया कि पब्लिकली अगर वो ऐसी कोई बात करते हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? यूएपीए के जैसे यूएपीए का जो हम नॉर्मल इंसान अगर हम अपने हक के लिए आवाज उठाए तो यूएपीए हमारे ऊपर लागू होता है, लेकिन अगर वही चीज जो है सांसद अगर कोई करे तो उनके लिए ये क्यों नहीं लागू होता है और उनके लिए क्या लागू होता है? The reason is majoritarian government, a government who has brute majority in the parliament, who does not have to fear anything, who does not even want to comply with the constitutional principles. That is the only answer. Anything else? You have to wind up because the next session has to start at 5. Last question. I'll take the last question. My question is to Khalid. The question is very simple. Our Muslim political parties and Muslim political communities and organizations are bad at numbers? Because many a times we come with qualitative arguments, but those qualitative arguments are not based on quantitative data. So are we bad at numbers? For example, I'm saying that if you take on electoral politics, the Western UP that you know, I mean, there are 45% of Muslims living over there. I mean, if you take further to the northeast region, there are significant Muslim populations living over there. But then, if you see, I mean, you're saying, I mean, there are Muslim political parties for quite a long time, but they have not been able to tap to these numbers with issues they're actually getting into. Are they just reacting or being remained as a reactionary to the majoritarian one? Is it because they are bad at numbers, in substantiating or making their rights that they needed? I think it's not only politics, but in every sphere. After such a committee report, there is a realization within the community that we are backward, we are not represented in every institutions or underrepresented. So we have to claim our right in public sphere and institutions. So that's why I told that most of the political parties, these were established after such a committee report. And I think it's too early to conclude that it's a kind of reaction. In fact, they are learning politics because I'm in touch with many activists of different Muslim political parties. One person who contested election from Bihar and could not win.
I asked the same question. Why did you fight? Why did you contest? He told that I realized that after contesting election, I could educate my people. I could create a team who know politics better. And I am hopeful that in future we will be able to develop leadership within Muslim community. So far, number in terms of success in election is concerned, I think if Muslim political parties, if they come to certain kind of understanding or alliance, then they can win more than 50 MP seats. And in many states, they can be part of the government. Like, for example, West Bengal. I know that many Muslim parties, they are working hard in Muslim majority districts like Murshidabad and Malda, and they are targeting next election. And in that state, 28% population is Muslim. So we may expect that they may win some seats, and in future they may be the part of the government, the way it happened in Assam. So I think it's too early to conclude that it's reaction. Thank you. So I think we are coming. Yeah, she one line. I just wanted to add to what he said, and there are those reasons also, but there are other systematic reasons also, structural, systematic reasons which are put in place specifically to dissuade political representation of Muslims. The area where I live in, Jamia Nagar, it falls into 3 constituencies. This is specifically done to divide the votes of the community. So these kinds of tactics, and when delimitation keeps happening again and again, we never talk about it. I don't see it in the popular, opinion. I don't see it in the popular debate talking about why this delegitimization exercise is being done. And if you will say so, then you will be called unsecular or communal. Because, oh my God, if you work hard, so you don't just need Muslim votes, don't do identity politics. So this kind of, इस तरह का जो rhetoric है, it also needs to be, countered. So we are coming. You want to ask something? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद नसीमा, मैं आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मेरा प्रकाशम जिला ओंगोल जिला है, कंदुकुर मंडल है। मैं हमारी सरकार जो आंध्रा के सीएम जगन मोहन रेड्डी के इसमें वार्ड वॉलंटियर 2.5 साल करा था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है मालूम नहीं। मुस्लिम को आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी भी ज़रूरत है, दीन भी ज़रूरत है। दीन का काम को दूसरा एप्लीकेशन बाहर हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि तो दीन फैलाओ, टेक्नोलॉजी फैलाओ। आजकल एक स्टालिन बनना, एक ठाकुर बनना, एक जय भीम के अंबेडकर बनना बोलिए तो सब कुछ भी जानना है, लेकिन हमारे मुसलमान में जो एक मदरसा नहीं भरता, मस्जिद नहीं भरता, दिलों में खौफ नहीं आती, आदमियों को ये जो सियासत में बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजी बोलते, बड़ों के लिए वो गरीब वाले थोड़े रहते, पढ़ा सके या मजबूर भी सके, वैसे आप डेवलपमेंट। आपका सवाल पूछिए ना। सवाल पूछिए। जी, मुसलमान को कई को इतना पीछे भगाते, सामने क्यों नहीं आते? हिजाब के कब काम हुई, उसका पिटीशन का आंसर 1 महीना लगता, 2 महीना लगता, साल लगता। वो हिंदू ईसाई के है तो तभी 4 दिन 5 दिन में फैसला हो जाके ग्रीन सिग्नल आता। हमको कहीं को नहीं को देते। इसलिए बोल रहे हैं हम ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस भी अभी भी है, जुडिशरी भी है, उसमें हम पूरा भरोसा रखना चाहिए। Alhamdulillah. So we are winding up this session. So there is a resolution which will be read out by the organizers. Assalamu alaikum. Resolution on denial of education to hijabis. It is hereby resolved by the National Conference conducted by Muslim Students Federation at New Delhi on 28/2/2022 that the education shall not be denied on the ground that the students wear hijab. Students shall not be put in a situation wherein they should choose either hijab or education. Wearing of hijab is an essential religious part of Muslims, and thus it has the protection guaranteed under Article 25 of the Constitution of India.
This conference urged the government of Karnataka to abstain from obstructing the studies of hijabis wearing students. Presented by Nishana and seconded by Suraifa. Thank you. Now, here distributing the mementos for the panelists and our leaders. First of all, we are inviting Nawaz Sharif Qureshi, Maharashtra MSF President, to provide the memento to our beloved leader, E.T. Muhammad Sahib. I invite Farhad Sheikh to give out a token of love to Safura Zargar, a student activist. Next, I call upon Tausif Hussain to give out a token of love to Arshi Qureshi. Now I call upon the MSF President of Jharkhand, Shahbaz Hussain, to give out a token of love to Dr. Khalid Khan, Assistant Professor of Indian Institute for Dalit Studies, New Delhi. Next, I call upon the Working Secretary of MSF Delhi University, Nishana, to give out a token of love to Advocate Haris Biran sir. Thank you all the panelists for the valuable time. We had a thought-provoking and intellectually stimulating discussion on the burning issues of the country. We hope everyone developed insights from this dialogue. We believe you all will speak up for the causes and concerns raised here. Next, we are taking up another crucial issue which has a great impact on the future of our country. We, Muslim Students Federation, are committed to scrutinize and assess every major decision taken on behalf of the students of India. MSF has always taken visionary and student-oriented decisions against several flawed policies regardless of the government sitting in power. It is in this light that we take up the session on the new education policy. In this session, we look forward to minutely assess the various dimensions of the NEP. We are privileged to have some leading academic voices of the country to discuss the nuances of this topic. Respected participants, please be seated on your seats. The session shall begin shortly. Here we have the Associate Professor of St. Stephen's College, Delhi University, the lecturer in mathematics since August 1981 till date, lecturer in Reader's Grade since 1997, the one who constantly speaks for the rights about the issues and the bold voice who was an reader in every field. Proudly, let me welcome here Professor Nandita Narayan, Associate Professor,
St. Stephen's of College, Delhi, former President, DUTA. Now, the radiant, powerful, vibrant, vociferous champion of civil rights, hawkish political commentator, and prominent columnist. Yes, Professor Aburwal. The staunch activism of Professor caused even for naming in the biased charge sheet of Delhi police in Delhi riot case. We heartily inviting Professor Aburwal to this session of deliberative discussion. Introducing the eminent academician and scholar, Professor of Political Science at Zakir Hussain College, University of Delhi, who is the mentor and amigo of students and who take lead and role in the protest for teachers as well as students. Heartily inviting Professor Dr. Aftab Alam to the esteemed dais of Msf National Students Conference. Dr. Aftab Alam sir is presiding and moderating our session, and over to you, sir. Thank you very much for inviting me here to be part of this gathering, which is discussing themes or topics that are relevant to us, for all of us today, given the contemporary challenges that we are facing. These are the issues. I can see the topics that are mentioned here. I think we need to deliberate upon these things seriously, and also look forward to steps that we can take as a collective, as a whole, as a community in India. I have been assigned the task of, technical, in a technical manner, I can say that it's a kind of timekeeping exercise on national education, new education policy. We have scholars who have actually contributed on the subject and also have been working on the subject for a long time. Before coming to that, I'll just introduce some, or I'll flag off some of the issues that new education policy has thrown up for us, for all of us. The new education policy, which is supposed to be the policy that will guide the higher education or education in toto in India for a long time to come. So we all are stakeholders in this education policy. This policy is also relevant for the larger socio-economic transformation of the country. This policy has come, new education policy has come after 86, from 1986, there has been more than 30 years, I think, this policy has come. So it is going to have a long-term impact in education sector. What I, as a student of political science, can relate with this policy and see the resonance in various sectors, that there is something called new economic policy in the country. And particularly this new education policy resonates with the new economic policy that the country is having today, particularly the neoliberal agenda that our government of the day is focusing on, and which the neoliberal agenda, for which actually the higher education is something that in which the state is going to abdicate its responsibility from the social sector. So it's a kind of challenge for all of us that as a society, as a country, how to respond to these challenges.
Particularly, new education policy should focus on structural disadvantages that socio-economically marginalized communities are facing. But if you go by the document, that which is I think 62-page or 66-page document, new education policy, you will find that there is not much focus to address these questions of strengthening these communities, also strengthening the secular or democratic space in the country. This new education policy has also, it's a document which furthers inequality, which is already there in our society. It talks about glorification of the ancient Indian culture. It talks about privatization, promoting privatization. Also, it undermines the right to education that we have in the country. And it talks about replacing the constitutional values with some banal ideas of ahimsa, swachhata, sacrifice, or seva, and it ignores the constitutional ideals which the earlier economic policy, education policies used to focus on. The word autonomy, which has also been used which is a misnomer, I can say, in the document. It uses autonomy, but this autonomy is largely towards privatization. Which actually forces the academic, uniformity, and also it talks about financial autonomy rather than the autonomy in academic space. It ignores, the increased state funding that is required in this particular sector. It also, if you go by the document, you will find that there is no concerted effort to increase the GDP ratio, the percentage of GDP on education. 2020 NEP also somehow implicitly or explicitly discourages any notion of plurality, diversity, thereby in a way also avoids the critical thinking, or it somehow imposes uniformity or homogeneity in a higher education particularly. There is no reference to the composite context that we are living in, composite social context in the country. So this is something that is also one of the critique of this policy. Kothari Commission, if you have read Kothari Commission, there are a lot of resemblances, and other education policies have looked at the Kothari Commission, and they have also reflected upon those things. But in this report, you will find that there are two things that they have ignored many other things, but two things that they have talked about. For example, instead of universal human values or constitutional values, they have focused on Indian values as such. So there is a problem on that also. If there is a time, we can discuss on that later. Common school system. This document has, conveniently avoided this term as well. Common educational school system that Kothari Commission talks about. There are many other problems, like there has been parliamentary oversight, that you can see that it was passed at a time when there was no deliberation in the parliament. Commitment to finances also, you can see there is no serious commitment or the attempt to increase it to the 6% of the GDP. Reservation, if you see, there is a serious issue here. In this document, and I try to go into the deeper, and I could not find any reference to reservation or affirmative action for the socially marginalized communities in the country, leave alone this socio-religious community. So these disadvantages of social and economic categories have not been addressed in this document. I think Professor Nandita will talk about DOG, which is actually an attempt to privatization. And there is an attempt of privatization using the term like philanthropic activities or privatization in higher education. There are many ways in which the privatization is being envisaged. These are the dangerous designs of new education policy. Particularly, one of the dangerous attempts of this policy, new education policy, is distorting India's historical legacy. It focuses very narrowly about the India's ancient glorious past, but it hardly talks about intellectual or tradition that actually is plural, that is eclectic. For example, in ancient India, there are a lot of Shamanic tradition, for example, which was critical of the Brahmanic tradition. It does not bother about those traditions. Gautam Buddha or Mahavira, or you can take many names. In medieval India, if you come, you will find Sufi Bhakti tradition in medieval India, or the Sikh tradition. This particular document is particularly a Brahmanical project. If you go by, if you read it, Charvak also, the tradition of Charvak has not been mentioned in this.
There is another problem with this document, which is it's a kind of assault on the India's federal structure by introducing the institutions from above. Also, I can give you one example of common admission, which is being talked about. Social justice agenda is being liquidated by this document. As I said, there is no mention of reservation for scheduled caste, scheduled tribe, or OBCs in this document. It's a highly corporatized educational agenda and also an agenda for Hindu Rashtra. There are two clear agendas that one can see. One is privatization, another is Hindu supremacism. And there are many examples that we can draw from this. In the appointment also, tenure track is talked about, which is very problematic. We can debate about that. If you go by the current of this document, you will find that there is an attempt to introduce the RSS agenda, RSS ideological underpinnings through different proposals that is mentioned there. If I come to the minorities, and you will be surprised to know that the religious minorities, which constitute around 20% of the all the minorities I'm talking about of the country, do not get any mention actually of any specific policy that okay, the state will do something. So there is no focus, there is no any attempt to increase the participation or representation of minorities in this particular document. So we find that there is a kind of mismatch. Also, minority is completely missing in this entire document of 2020. It's also an attempt to introduce the non-inclusive policy by silencing, by remaining silent on educational issues of the minority communities. And I have called out some of the data, but I think we don't have time to go into the data that how, what is the exact percentage. I can just give you one example. 1.9% minorities are there in IITs, IIM, and all the higher institutions. So there is a huge gap if you talk about the deficit in terms of percentage that this population percentage. Less than one third of the Muslim community is there in higher education. There are a lot of challenges, particularly the challenges of funding more than 6% or 6% of GDP. It should be. The policy also ignores the digital divide that we have in the country, where we don't have, in majority of the household we don't have internet connection, but there is this, focus on, digitalized education. Inviting foreign universities, there are problems attached with that. Infrastructure, there is a lack of infrastructure we can see. So what is the way forward? Some of the issues that I can highlight here is about universalization of education. What are the attempts through RTE, right to education, that we can do? About funding, expenditure. Unless until we increase that, we will not be able to achieve any grand visions on higher education. We also need to strengthen the secular and democratic space, how to achieve that. There are challenges and there are way forward that we need to focus on. Professor Nansita ma'am is here. She has been FEDCUTA president also. So FEDCUTA, which is Federation of Central Universities Teachers Association, also Delhi University Teachers Association, SFI, and many other students organizations, they have been very critical of these areas, KYS as well. And I think, madam, in one of the lectures, I remember you talked about new exclusion policy. And also it's the blueprint of privatization of education, rightly said. So, given all these challenges, what are the what is it that we can do? I think today's discussion or deliberation will focus on that. But there are two major deficits that I can highlight. One is absence of Muslim students concerns, or how to increase their, or how to allow them to be part of the 15 years educational structure, how to increase them and provide them quality education. Another is that how to strengthen the English language in the regional medium schools, and many other areas that we can talk about. So let me now come to the speakers for today who are here with us. We are fortunate to have eminent scholars here today who have been working and who are the torchbearer of these issues in the country. I can safely say that we have amongst us a lot of the public intellectuals of our time. Professor Apurvanand Sahab, I regard him for the kind of
guidance that he provides to us in terms of intellectual input and also in terms of providing the way to think about it and also challenging the mainstream discourse that is going on all around the country. Professor Apurvanand teaches in the Department of Hindi in the University of Delhi. He was born and raised in Siwan, Bihar, and received his... I'll just focus 2 or 3 areas. Before joining Delhi University, he was in Mahatma Gandhi International Hindi University. He has published books on Sundar Ka Swapna, Sahitya Ka Ekant, and also the idea of university. Many of you are students here. You can go and read this book, Idea of University. Education at the Crossroad. These are the major books that he has written. He has also been visiting fellow at University of Pennsylvania in 2010. Most importantly, for young students like you, I think you may be aware that he is one of the important political commentator today. His critical essays have appeared in all major, journals and magazines today. His academic and literary writings also and in Indian newspapers and magazines and issues on issues of education, culture, communalism, violence, human rights, democracy. So it's a regular kind of contribution that he does and comes up with a fresh insight on these issues. Today we have Professor Apurvanand with us. I would like to invite him to throw some light on new education policy. Thank you, sir. Thank you, Dr. for this generous introduction. I would like to know how many of you can follow Urdu or Hindustani? Very few. All of you can follow Urdu or Hindustani? No. So, some of you can't. But why we should use Urdu is apart from hijab, which is facing opposition in Karnataka. It's not only hijab, it was also put it before us. So we did not repeat that. लेकिन हमारे लिए ज़्यादा फिक्र की वजह क्या है? क्योंकि जिसे आप तालीम कहते हैं और जिस पर आप बात करना चाहते हैं, वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी हो, वह किस स्टेट स्ट्रक्चर में लाई जा रही है, उस स्टेट स्ट्रक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है। आज से 10 साल पहले हो सकता है हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर इस तरह बैठकर बात कर सकते और जैसे यहाँ कहा गया कि इसमें यह नहीं है और इसमें यह है, and then we could do a critique of the policy document and expect the government to respond to that. But we are in a very different situation. It's a very abnormal government. It's a very abnormal state. It is no longer democracy. We must understand it. This government doesn't believe in policies. We must understand that. So whenever you have a policy document before you, you must see what is behind it, what is happening around the document, and not get bogged down by what the document is telling you. Because we were discussing, and Aftab sir, you may correct yourself, this policy, to the best of our knowledge, was never brought before the parliament. It was never brought before the parliament. It's the cabinet decision. And you can, what this government is doing, it's implementing a national education policy which the parliament has not discussed. People's representatives, your representatives, they have not discussed this policy. It has not been ratified by the parliament. It's a cabinet decision.
and it's being implemented all over India. Now, generally, with each policy, what has been the practice, and we know the practice, which each policy, every policy, we have a program of action. The parliament discusses it, there is a threadbare discussion in the academic community and in society at large, and then the government comes up with a program of action. And that is how the policy is implemented. It cannot be a chaotic thing. It cannot be left to individual states or individual universities or whims and fancies of X, Y, and Z. You have to have a program of action. With the 96 National Education Policy, the government came up with a program of action. But this time, the government, without taking this document to the parliament and without coming up with a program of action, it has asked universities to start implementing it. Now we don't know what it means. Actually, whatever universities are doing in India, they say we are implementing National Education Policy. You take this component, and you start saying we are implementing. For example, in our Delhi University, now they have started implementing this 4-year multiple entry and multiple exit undergrad program, and they announced that this is an implementation of new education policy. How, from where it flows, there is no explanation. There is no need for explanation either. लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात है जो हम सबको समझने चाहिए, जो लोग तालीम में शरीक हैं, वो ये कि इस मुल्क को बदलने की कोशिश की जा रही है। अमूमन जो सरकारें आती हैं, वो सरकारें आपका जो दस्तूर है, आपका जो संविधान है, उस संविधान के मुताबिक काम करती हैं, लेकिन यह सरकार इस मुल्क को जड़ से बदल देना चाहती है। वो इसकी शक्ल बदलना चाहती है, वो इसकी सीरत बदल देना चाहती है, और इसमें तालीम एक बहुत बड़ा जरिया है, इसमें यूनिवर्सिटीज, इसमें स्कूल्स बहुत बड़ा जरिया है। इस बात को जब तक हम दिमाग में नहीं रखेंगे, तब तक हमें ऐसा लगता रहेगा कि ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये प्राइवेटाइज करने का एजेंडा है, ये यूनिवर्सिटी को कमजोर करने का एजेंडा वगैरह वगैरह वगैरह, और हम उन चीज़ों में, और ये कि कुल कितना % बजट का खर्चा हो रहा है, ये सारे सवाल हम करते रहेंगे। लेकिन असल सवाल है कि इस मुल्क को बदला जा रहा है, और उस सवाल पर जब तक हम बात नहीं करेंगे, इस मुल्क में आज के पहले हिजाब कभी भी बहस का मुद्दा नहीं बना था। आज ये राष्ट्रीय बहस का मुद्दा है, ये नेशनल डिबेट का मुद्दा है। आज हिजाब पर हर कोई अपनी राय दे रहा है, मुसलमानों के अलावा, और मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप उनकी राय को मानिए, वरना आप बैकवर्ड लोग हैं। मुसलमान औरतों को कहा जा रहा है कि अब आपको लिबरेट करने का वक्त आ गया है। जो कानून लाया गया 3 तलाक के बाद, और इन सारी चीजों को जोड़कर देखने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि कर्नाटक में जब यह विवाद शुरू हुआ, जब मुसलमान छात्राओं ने विरोध शुरू किया, उस समय प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे थे कि हमने मुसलमान बहनों को 3 तलाक वाला कानून लाकर आजाद किया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट को अलहदा करके मत देखिए, अलग से मत देखिए। जो चीजें हो रही हैं उनके साथ देखिए, जिसमें यह कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान पर जो भी मुसलमान रंग है, मुसलमान पहचान है, हिंदुस्तान में जो भी ईसाई रंगत है, जो भी मुसलमान रंगत है, उन सबको रगड़ रगड़ कर मिटा दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक रंग रह जाए। ये पूरा डॉक्यूमेंट, जैसा शुरू में भी इन्होंने कहा, ये इसकी एक बहुत चालाक कोशिश करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात नहीं करता है, ये कुछ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात करता है, ये कंपोजिट कल्चर की बात नहीं करता है। ये किसी भी वक्त यूनिवर्सिटीज या तालीम, और खासकर जब मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स हमलावर हो, उस वक्त यूनिवर्सिटीज का काम होता है
जो समाज के सबसे कमजोर लोग हैं, जिन पर हमला हो रहा है, उनके साथ खड़ा होना, यह यूनिवर्सिटीज का काम होता है। लेकिन यहाँ यह दिखलाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को इस मेजॉरिटेरियन एजेंडा में आगे बढ़कर इंजन की तरह काम करना है। तो आप इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जरूर देखिए, उसकी तमाम बातें आफ्ताब साहब ने कह दी हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के आसपास जो हो रहा है उसको देखिए, और वह है पूरे के पूरे एजुकेशन को एक तरह के नेशनलिज्म का व्हीकल बना देना। पूरा एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन नेशनलिज्म का व्हीकल होगा, नेशनलिज्म प्रोपेगेट करेगा, नेशनलिज्म का प्रोपेगेंडा करेगा। और आप ये सवाल कर सकते हैं कि दुनिया में कहां, दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में नेशनलिज्म प्रमोट करना एजुकेशन का काम होता है? एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव कभी भी नेशनलिज्म प्रमोट करना नहीं हो सकता है। दुनिया की किसी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में नेशनलिज्म को प्रमोट करना अब यूनिवर्सिटीज का ऑब्जेक्टिव हो गया कि उनको नेशनलिज्म को प्रमोट करना। और वो नेशनलिज्म किसका नेशनलिज्म है? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेशनलिज्म, जिसको प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटीज को कहा जा रहा है। तो जो चीज, जब ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे और मैं ये पूछ रहा था कि इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जरूरत ही क्या रह गई, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटीज को तोड़ कर रख दिया। भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर या तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बैकग्राउंड के हैं या उससे जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल में क्या किया गया, ये आपने देख लिया। हमारी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, यह भी आप देख रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो काम है, यूनिवर्सिटी का काम है समाज के अलग अलग तबके के लोगों को एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करना जिसमें वे एक दूसरे के साथ इत्मीनान से साझेदारी कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ नए रिश्ते बना सकेंगे, जिसमें वो खुद मुख्तारी हासिल कर सकेंगे, जिसमें उन्हें कॉन्फिडेंस मिल सकेगा कि हम समाज में बराबरी से बोल सकते हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटी कैंपसेस को पूरी तरह से बदल दिया जा रहा है और यूनिवर्सिटी कैंपसेस एक तरह से एबीवीपी के हवाले की जा रही है। केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का किस्सा आपको याद होगा, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर गिलबर्ट सेबेस्टियन को सस्पेंड कर दिया गया उनकी एक क्लास के चलते। तो अगर अब टीचर अपनी क्लास में सेफ नहीं है तो फिर वो कहां सेफ रहेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को लेकर इसे बहस करने लायक भी नहीं मानता। मुझे जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया और बहुत सारे अखबारात ने कहा कि आप लिखिए, मैंने कहा कि मैं इसको इस लायक नहीं मानता हूं कि इस पर लिखा जाए। हमें यह देखने की जरूरत है कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है और उस पर हम बात करें। यूनिवर्सिटी पहले ही तकरीबन बर्बाद कर दी गई है और तहस नहस कर दी गई है। आप फेडरलिज्म खत्म कर देंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटीज भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सब पर यूजीसी के जरिए कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यूजीसी का हेड अभी एक ऐसे शख्स को बनाया गया है जिसने जेएनयू को बुलडोज कर दिया और अब उसको यूजीसी का जिम्मा दिया गया है। यूजीसी इसके पहले भी मिनिस्ट्री के डोरमैट से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक सर्कुलर पहुंचता है, हर यूनिवर्सिटी में सर्कुलर पहुंचता है। एमएचआरडी ने यह कहा है, यूनिवर्सिटीज में एमएचआरडी का सर्कुलर आने की कोई जगह नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब एमएचआरडी इंस्ट्रक्ट कर सकती है और यूजीसी सिर्फ पोस्ट ऑफिस का काम करती है उसको पहुंचाने का। इन सारी प्रोसेसेस को मेरी आपसे गुजारिश है, आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रेटरिक से अलग कर हटकर जो जमीन पर हो रहा है, जो आपके कैंपसेस में हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, उसको गौर से देखिए, उस पर रिएक्ट कीजिए। जैसा मैंने कहा, यह सरकार पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके सामने सिर्फ इसलिए रखती है कि आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर बहस करने में मसरूफ हो जाए और सरकार को जो करना है वो यूनिवर्सिटीज में वो उससे अलग और उसके सहारे करती चली जाए। खतरा हिंदुस्तान में इस बात का है कि तालीम या नॉलेज, जिसे आप कहते हैं एजुकेशन और नॉलेज, ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। नॉलेज क्या चीज है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा जब आपको ये कहा जाएगा
कि हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ हमारे पुरखों ने पैदा कर दिया, सब कुछ वेद में है, साइंस पहले ही हम कर चुके, तो हमें फिर करना क्या है? अगर सब कुछ हो ही चुका है, सब कुछ पहले से वेद में है और हमें सिर्फ अपनी पुरानी संस्कृति का गुणगान करना है, तो फिर यूनिवर्सिटीज हैं किस लिए? यूनिवर्सिटीज का काम नॉलेज जनरेशन का काम होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर नॉलेज का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया जाएगा तो फिर यूनिवर्सिटीज अपने आप ही बेकार हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि पिछले 7 साल में इस सरकार के जो मेजर अनाउंसमेंट्स हैं उनमें आप अगर उनका सर्वे कर लें और उनको स्टडी कर लें तो नॉलेज लफ्ज आपको नहीं मिलेगा। उसके पहले जरूर मनमोहन सिंह की सरकार में नॉलेज इकोनॉमी जैसी एक चीज आती थी जिसके हम क्रिटिक रहे हैं, लेकिन यह सरकार तो नॉलेज लफ्ज का इस्तेमाल ही नहीं करती। और इससे आपको रुख मालूम हो सकता है कि रुख क्या है। उसको समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। जरूर इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देखिए और उस पर बहस कीजिए और उसको क्रिटिक कीजिए, लेकिन जो हो रहा है उसको बहुत गौर से देखिए और बिना एक लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रगल के और बिना इस सरकार को हटाए इस पॉलिसी से लड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए हमारा फर्ज यह है कि हम जैसे भी हो इस सरकार को बेदखल करें सत्ता से, और उसके बाद ही हम आगे एजुकेशन पॉलिसी और किसी और चीज पर बात करने की हालत हमारी है। बहुत शुक्रिया। As you know, Professor Apurvanand has to leave early, so we can have a brief session of 5 minutes discussion for him, and then we can go for Professor Nandita's lecture. So if there are any questions, you can ask before he leaves. But no, I'm here. It's okay. So if there are questions, yeah, please, पूछिए. Thank you, Professor Apurvanand. It is always a pleasure to hear you. And the simple question is that this is a student body. You have mentioned that the policy document is a non-document. It need not be discussed between the grades. We can throw it in the dustbin. Fine. But what exactly a student can do about it? Is it not the educationists or the teachers or the people who are involved in policy making or have been involved in policy making should be more vocal about it? एक स्टूडेंट तो जाता है अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ के वापस आ जाता है, उसको इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता unless they are the student leaders and the activists at a later stage, at a senior stage. But एक कॉलेज में अंडरग्रेजुएट या हाई स्कूल में जाने वाला बच्चा इस बारे में क्या कर सकता है, उस पर थोड़ा सा अगर एजुकेट करें हमारे बच्चों को तो ज़्यादा मेरे ख्याल में कई बार स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। जैसे कर्नाटक में वो 6 स्टूडेंट्स थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई बड़ी मुहिम नहीं थी, तो उन 6 स्टूडेंट्स ने बताया कि राइट टू चॉइस का क्या मतलब होता है। तो मैं और वो 6 स्टूडेंट्स जानती थी कि उनको वो किस चीज़ का सामना कर रही हैं, किस स्टेट का सामना कर रही हैं, उनको पता था और उनके परिवारों को भी पता था। इसलिए मेरी ये समझ है कि जब CAA कानून आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो मैं ये खुलकर कहता हूँ कि मुसलमानों के अलावा जिस कम्युनिटी ने सबसे पहले CAA की मुखालफत की वो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या कोई भी हो, तो स्टूडेंट्स के पास एक ऐसी नाक है जिससे वो लार्जर पॉलिटिक्स को सूंघते हैं, अगर वो सही मायनों में स्टूडेंट्स हैं तो। और इसलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस उनकी तरफ से आता है।
मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, मैंने कहा कि ये एबनॉर्मल गवर्नमेंट है, ये एबनॉर्मल स्टेट है। मनमोहन सिंह के समय हमने बहुत बहसें की, कई तरह की बहसें की, क्योंकि वो एक नॉर्मल स्टेट था। ये एबनॉर्मल है। ये आपसे कहेगा कि आप बहस कीजिए, आप बोलते चले जाइएगा, आपके बोलने का कोई मतलब नहीं है। आप कुछ ज्यादा बोलेंगे तो आपको एंटी नेशनल कह के जेल में डाला जा सकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस एबनॉर्मल स्टेट को पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि इसको डस्टबिन में डाल, लेकिन मैंने ये कहा कि इस चालाकी को समझिए कि आप डॉक्यूमेंट पे ध्यान देंगे और जब सर उठाएंगे देखेंगे कि आपके चारों तरफ यूनिवर्सिटीज का मलबा है, कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि इसको न करें। तो इसलिए इस लार्जर पॉलिटिक्स को रेजिस्ट करना और इस लार्जर पॉलिटिक्स को अनसीट करना पावर से, ये हमारी प्रायोरिटी है। Professor Abu, जी, I'm in the right. I'm Samir. So my question is, like you have spoken about, what is the agenda behind the current government on with this new education policy that we talk about Veda and all. But I have a larger question to it, which is not related to MEP per se, but on an epistemological level or on intellectual traditions. So the question is very simple. And I shall elaborate a bit further on that, but what is your opinion about knowledge and religious experience? That's the question, knowledge and religious experience, number one. And why do I ask this question is because, see, our obsession with Western epistemic tradition or Western philosophical traditions has taken away much larger intellectual tradition that has emanated in the East. For example, there is strong Islamic intellectual tradition in 14th and 15th and 16th centuries. If you see philosophers like Ibn Rushd, Al-Ghazali, they have eminently written on infinite systems of philosophy. You can get any number of books on Islamic intellectual traditions. When, for example, to write about on 20th century, early 20th century, Iqbal, he was also, somebody who speaks about reconstructions of religious thought in Islam. So, largely, of course, it's understood when you are contesting a particular government that has come with the religious agenda onto the syllabus. But largely on a larger debate, are you still obsessed with Western cosmology and its philosophies? Will you not give space for intellectual traditions that has emanated from this part of the world? What's your opinion on that? Let me first of all admit my inadequacy to respond to your question, because I have not invested much time in thinking about religious experience. So I must not venture into an area I'm not familiar with. But I understand what you're trying to say. You are trying to talk about the epistemic traditions which are different from the Western and modern traditions. But my question to all my friends, and this is what the RSS also tells us, that we have our epistemic traditions, Indian tradition, Indian thought tradition, and why not go back to it? But my question is, you talked about Iqbal, and I have no issues with that. My question is that what are we doing now? It's not about Western or Eastern. It's not about Islamic or Hindu. I'm not against religious, you said religion. No. I am against the political use of religion, a majoritarian agenda. If you implement it in a Muslim majority country in the name of Islam, I will oppose it. Again, using the cover of Islamic epistemic traditions. So that's what is happening in India. And my question, simple question is, that those who talk about Indian intellectual traditions, so is it all about the past? Or are you producing something now? What are you doing with that tradition is important. I have no problem. Do interact with them. But what is that you have brought to me, brought on the table? You or someone else?
it would be of some value if something is produced or created now and not constantly keep whining or complaining that we have forgotten our epistemic tradition. So please interact with that. Bring something new, create something new, and challenge, because I think, be it Islamic or be it quote unquote Hindu or some other tradition, it has to interact with all traditions. If it doesn't interact with other traditions, be they Western or other traditions, I don't think it's going to be of any value to me. That's my understanding. As I said, that since I have not invested my time and intellectual energy in this field, I have already admitted my inadequacy. Yeah. Sir, my question is related to this question, last question. For example, said that the new education policy talks about ancient the Hindu literature. And it endorses the ancient thoughts also. But instead of, it's my personal opinion, instead of simply ignoring these kinds of narrative, should we not try to build counter narrative, because there is no homogeneous ancient India, there is no homogeneous medieval India. So and how to go ahead? I understand your question, and you are right. There is no homogeneous tradition neither in Islam nor in Hinduism. It's very heterogeneous, it's very diverse, and we must learn to interact with it. But I would, and I don't have time, but I would urge you to also think about the use of the term narrative, because narrative is a very deceptive term. When was it introduced, and why did we fall in the trap of these terms like narrative? Okay. What this national education policy is doing, it's vulgarizing the forms, the very notion of what is ancient. So my problem is not with ancient or medieval or something. My problem is vulgarization of these concepts. So you are simplifying it. I'm talking to the national education policy makers, and you are vulgarizing it. If there were a sincere attempt to interact with the ancient tradition, and there have been scholars who are doing it, but I don't see any sincerity in this document. What you want to present in the name of ancient is an RSS ancient. That's all. हमारे यहाँ शून्य था, हमने शून्य पैदा कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया. ये एंशियंट है. अगर ये एंशियंट है तो ये बहुत वल्गर है. इसमें कुछ भी इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं. जी, मेरा नाम शहजाद बदरी है. क्वेश्चन ये है सर कि हर गरीब का बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता. हिंदुस्तान में पढ़ाई को देखा जाए तो कहीं ना कहीं और मुल्कों से ज़्यादा महंगी पढ़ाई मानी जाती है. जैसे यूक्रेन में हमारे कुछ छात्र, मैं समझ गया, सवाल समझ गया. ये महंगी है तालीम. जी, यूक्रेन में जो मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं वहाँ सस्ती है. इंडिया में इसकी को एड्रेस का कोर्स किया जाए तो काफ़ी, ये क्या वजह है, क्या खामी है? खामी तो वही है कि हिंदुस्तान में स्टेट ने जिम्मेवारी नहीं ली है एजुकेशन की, और उसने उसको उतना अहम नहीं समझा. जिस बात को अमर्त्य सेन पिछले दिनों कहते आए हैं कि अगर आपको एक हेल्दी मुल्क बनाना है, एक सेहतमंद मुल्क बनाना है, तो आपको दो चीजों में इन्वेस्ट करना है. एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ. लेकिन अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आर्म्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वही हालात पैदा होंगे जो हो रहे हैं, जो आपने जिनकी तरफ इशारा किया. तो आपकी प्राइमरी इंटरेस्ट किसमें है ये देखने की जरूरत है. आपका डिफेंस बजट और आपका एजुकेशन बजट और आपका हेल्थ बजट. पैंडेमिक के बाद हेल्थ बजट और भी कट गया, लेकिन उस पर जनता में कोई शोर नहीं है. जनता में एजुकेशन पर कोई शोर नहीं है. ये भी तो एक रिफ्लेक्शन है कि हम लोग किस किस्म के समाज हैं. जी जरूर.
नहीं, अभी ऐसा नहीं है। सर अभी जो पब्लिश होकर आई न्यू बुक्स एनसीईआरटी सर, मैंने खुद देखा उसके अंदर जो सिलेबस हमने पढ़ा हिस्ट्री में मुगल पीरियड, वो मुगल पीरियड उसके अंदर नहीं है। वन क्वेश्चन। एंड सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है सर कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था हजरत मोहानी ने, तो सर उसमें बुक के अंदर ऑप्शन दे रखा है इनकलाब जिंदाबाद के लिए बाल गंगाधर तिलक, इंदिरा गांधी और गांधी जी और नेहरू। तो सर इसमें इनकलाब जिंदाबाद का नारा था हजरत मोहानी ने दिया था, हमारे पास है ये। तो सर ये जो पुष्पतिकारी तो गलत ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसके अंदर बुक में, तो सर इसके लिए क्या इलाज करना चाहिए? मैंने तो आपसे कहा कि ये लार्जर एजेंडा है जिसमें मुसलमान नाम, मुसलमान पहचान, कोई भी मुसलमान रंग हिंदुस्तान पर न रहे, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। यह कोशिश किताबों के जरिए होगी, यह कोशिश सिलेबस के जरिए होगी। आपको जब भी हिंदुस्तान की बात की जाएगी तो हमेशा एक वैदिक पास्ट की बात की जाएगी। बीच में एक पूरा वक्फा है, बड़ा वक्फा है। चूंकि अब अगर आप दिल्ली का इतिहास कहेंगे, और मैं सिर्फ ये बात कह के खत्म कर, आप बैठ जाइए, आपने अपनी बात कह दी और मेरे कोई ना इत्तेफाकी नहीं है उससे। मेरे एक कोरियन स्टूडेंट ने मुझसे कहा, कोरिया के स्टूडेंट ने अचानक एक दिन आके कहा, उसने कहा कि सर ये लोग मुसलमानों को इतना बुरा भला कहते हैं, लेकिन दिल्ली में तो सारे मॉन्यूमेंट इस्लामिक हैं। ये कोरिया की एक स्टूडेंट आकर दिल्ली घूमकर वो समझ गई कि दिल्ली की बात ही आप नहीं कर सकते बिना मुसलमानों के बारे में। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि ये सब कुछ मिटा दिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक लार्जर पॉलिटिकल एजेंडा है और कल्चरल एजेंडा। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चाहे रिलीजन के बेस पे हो या जन विरोधी कानूनों के बेस पे हो, हमारी न्याय पालिका क्या कर रही है? उस पर फौरन क्यों संज्ञान नहीं लेती है? मान लीजिए कि कोई सांसद है, विधायक है, कोई रिलीजन के बेस पे या किसी भी चीज पे आपका सवाल मैं समझ गया। इसके पिछले सेशन में आप लोगों ने बात सुनी और आपने ये सुना कि हिंदुस्तान में जो खतरा अभी दरपेश है वो इस वजह से है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को कायम रखने का जिम्मा जिन इंस्टीट्यूशंस पर था, वो इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट की, वो इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी की, वो इंस्टीट्यूशन है मीडिया का। इन सारे इंस्टीट्यूशंस ने एक तरह से गठजोड़ कर लिया और ये बहुत ही खतरनाक बात है। और मैं एक कदम आगे बढ़ के कहूंगा कि अब खतरा ऐसा लग रहा है कि ये जरासीम आर्मी में भी है। तो अब ऐसा लगता है कि सारे इंस्टीट्यूशंस ने गठजोड़ कर लिया है हिंदुस्तान पर एक हिंदू राष्ट्र को थोपने के। हम इस मुकाम पर खड़े हैं और जुडिशरी उसमें साथ है, वरना बाबरी मस्जिद की जमीन का वो फैसला नहीं होता जो हुआ है, वरना हैबियस कॉर्पस जो जम्मू कश्मीर के लीडरान जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद की जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन लगाई गई, जो सबसे सीक्रेट चीज है कानून में, उसको आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना है। 370 को आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना है। तो अगर यह सब कुछ हो रहा है तो फिर जुडिशरी के बारे में अलग से बात करने की जरूरत है। पॉलिटिकल स्ट्रगल कीजिए, पॉलिटिकल स्ट्रगल कीजिए, जुडिशरी से गुहार मत लगाइए। एक आपने बोला कि यूनिवर्सिटी के ढांचे को बचाना है या एजुकेशन सिस्टम को बचाना है तो सरकार को बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर सरकार नहीं जाती है तो इसके लिए कोई फार्मूला है आपके पास? आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सरकार क्यों नहीं जाएगी इसका मतलब कायदे से स्ट्रगल नहीं की गई। इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपने इस सरकार को जितने दिन आप रहने देंगे, जितने भी दिन बैठे रहिए, जितने भी दिन रहेंगे, हिंदुस्तान खाई में और नीचे गिरता चला जाएगा। उसके बाद उसका वापस चढ़ना बहुत मुश्किल है। इस बात को हिंदुस्तान के सारे लोगों को समझना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों को। Thank you very much, sir. Now, the organizers will honor Thank you.
much more vivid perspective about new educational policy. Now it's time to give away a token of gratitude to our beloved guests. Firstly, I welcome Msf Coimbatore District Convener Mansoor Sir to provide the memento for the columnist, political commentator and Professor Aburwanan Sir. Sir, please. Thank you very much, sir, for this wonderful insights, fresh insights on NEP, particularly highlighting the larger agenda attached to new education policy, which many of us actually forget or avoid talking about. Thank you, sir, for your insights. That's the only way that we have. Particularly about university, also the way he has, shared his insight that how university is being reduced into a kind of shaka institution. Where institution or university is not having that democratic space of discussing ideas and all, but rather there are bombardment from above. Also, he has talked about university as a vehicle of a propaganda for nationalism, which is very dangerous. So we need to contest these ideas that when a university becomes a kind of vehicle or a machine for propaganda of a particular kind, which is nationalism of a particular kind, which is not the civic nationalism that we talk about. It's an ethnic nationalism or cultural nationalism that universities are being forced to take up. Now, I would like to, without taking much time, I would like to invite Dr. Nandita Narayan. She's Associate Professor in the Department of Mathematics in Stevens College, University of Delhi. She has been former President of Delhi University, our leader, the one who is one of the finest teacher activists that I have seen in my life as a teacher. She has had all the struggles for higher education, always defended the public institutions, rights of teachers and students. She has been fighting for. She has also been former President of Federation of Central University Teachers Association from 2015 to 2017. She has also been chairperson of Joint Forum for Movement on Education, comprising all universities, colleges, and school teachers association and students organization. She has also been member of Academic Council of Delhi University and Executive Council of University of Delhi, as I remember. And she has also presented paper on several issues. Despite she comes from mathematics, which is a different kind of subject, she takes interest on all social and political issues and has been part of the conference seminar that presented resource person. Thank you so much. First of all, I would like to say to all of you that it is so wonderful to see you. पिछले 2 सालों में हम ये वेबिनार करते करते थक गए और ऑनलाइन क्लास करते करते थक गए। जब कोई चीज चली जाती है तब उसकी इम्पोर्टेंस का हमें एहसास होता है। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी क्लासेस इतनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, मालूम था है। शुरू से हमने कहा कि ऑनलाइन नहीं चलेगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमें 2 साल का रहा है, ऐसा एहसास हुआ कि जब 17 फरवरी को हमारी यूनिवर्सिटी खुली 2 साल के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल, तब स्टूडेंट्स और हम लोग एक दूसरे के प्रेजेंस में ही इतना खुश हो गए। अगर एक लफ्ज भी मैं ना बोलती, ना वो ना बोलते, तब भी हम लोगों ने कुछ सीख लिया था। शेयर ह्यूमन प्रेजेंस कि कितना important education is a social activity, it is a human activity, it is not a digital activity. ये कान खोल के सुन लीजिए सरकार, और ये education के व्यापारी सुन ले। Education एक digital activity नहीं है, एक human activity है, the activity of the mind and of the soul, of the emotions, of everything. तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती थी कि 2 साल एक अंधेरी सुरंग में चलते चलते हम लोगों को थोड़ी सी रोशनी मिली है और पता चला है कि स्टूडेंट्स कितना कम सीख पाए। बड़े दुख की बात है। होपफुली हम मेकअप करेंगे, लेकिन मेरे कॉलेज में भी जो एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, मैं सेंट स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ाती हूँ,
कितनी मुश्किल कनेक्टिविटी में, स्मार्टफोन किसके पास है नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा है, आज तक हमारे कॉलेज के अंदर कनेक्टिविटी नहीं होती। कौन से हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं? हमें पता चला है कि हमारे स्टूडेंट्स में भी मोर देन 50% ड्रॉप आउट हो गए थे ही नहीं, और वो 50% में भी किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया, बहुत कम करते थे, कहते रहो फिर भी नहीं करेंगे, बहुत कम सवाल के जवाब दे रहे थे, और एग्जाम तो मजाक बन गया था, आपको भी मालूम है, अभी मालूम है। वो मजाक जिसकी आदत डलवा दी सरकार ने, आदत पड़ गई, बिना पढ़े इधर उधर से अरेंज कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा, कर लेंगे। अब जब ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है तो हालत खराब है स्टूडेंट्स की, उसी से परेशान है, रायट्स हो रहे हैं कई जगह, नहीं ऑफलाइन तो जाती है हमारे साथ, ये हालत हमारी बना दी इन्होंने। तो वो डिग्री जिसका जो वैल्यू है, उस पेपर का भी वैल्यू नहीं है, उस डिग्री से हम क्या करेंगे? आपने पहले ही 2 साल में स्कूल्स को, कॉलेजेस को बर्बाद किया, रिवर्स करना भी मुश्किल है। अब ये अंधेरी सुरंग जिसमें से हम निकल के आए हैं, पता चल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या प्लान है, हमें दोबारा उस अंधेरी सुरंग के अंदर भेजना, कभी ना निकलने की। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, बाकी सारा कुछ भूल जाइए। सब मालूम हमें क्या एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं, कैसे खत्म करेंगे? रेजिस्टेंस खत्म करना है, कुछ भी कर लें, सीए लाए, पूरे देश में ऐसी हालत हो गई कि इनको उसको ऑन होल्ड रखना पड़ा, तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़े। ये डरते हैं स्टूडेंट से, ये डरते हैं यंग थिंकिंग माइंड से। चाहे कितना आपने प्रताड़ना की है जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी पे, नंबर 1 यूनिवर्सिटी हमेशा से अब भी चल रही है, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी में अपने तरीके से हुआ, इसके बावजूद स्टूडेंट्स आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी डाइवर्सिटी। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी डाइवर्सिटी। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको ऐसी डाइवर्सिटी, ये हमारी स्ट्रेंथ है। कितने डायलेक्ट्स हैं, कितनी कम्युनिटीज हैं, कितने रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, हर कम्युनिटी के अंदर भी इतने अलग अलग ट्रेडिशन हैं। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहां भी आपकी लैंग्वेज में फर्क आ जाता है, आपके खाने पीने में फर्क आ जाता है, आपके रहन सहन में फर्क आ जाता है। और ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, इसी को आप खत्म करना चाहते हैं। वाकई ये मतलब मर्चेंट्स ऑफ डेथ हैं ये, बिकॉज लाइफ इज हेट्रोजीनियस, लाइफ इज नॉट होमोजीनियस। आप हमारी स्ट्रेंथ को खत्म करके हमें ही खत्म कर रहे हैं, ये इनको समझना पड़ेगा। कुछ देर तक आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, उनके अंदर जहर घोल सकते हैं, जैसे हिटलर ने बोला था, आप उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। नेचर अपने आप को असर्ट करेगा। तो इनका मास्टर प्लान क्या है आप बताएं अफसर? जैसे किसान विरोधी कानून लाए गए, लेबर विरोधी कानून लाए गए हैं, कितने सारे पब्लिक सेक्टर बेच दिए इस आपदा में। कई लोग तो करोड़पति, मिलियनेयर, बिलियनेयर्स बन गए, टॉप 10 में, जो दुनिया के टॉप 10 में चले गए, और बाकी करोड़ों लोग पॉवर्टी लेवल से नीचे चले गए। ये हालत हमारे देश की। मैं कोई आंकड़े नहीं देना चाहती, मैं आना चाहती हूँ आप ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कर रही है, कैसे जरिया बन गई है इनके लिए। बहुत सारी चीजें पहले कही गई, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो पूरा प्रियम्बल है इसमें कई शेप्स में आया ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और पिछली एजुकेशन पॉलिसी जो 1948 राधाकृष्णन एजुकेशन कमीशन था और 1964-66 डॉक्टर कोठारी कमीशन था, उनसे ये रेडिकली डिफरेंट है। 1986 वाले से भी रेडिकली डिफरेंट है, हालांकि 86 में हमने विरोध किया। 48 में, 66 में क्लियरली था, ये समझ थी कि एजुकेशन डेमोक्रेसी को सही मायने में इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा जरिया है। एक गरीब देश में जिसमें इतनी इनइक्वालिटी है हर तरह की, चाहे आप रिलीजियस देखिए, चाहे आप फ्यूडलिज्म देखिए, चाहे आप पेट्रियार्की देखिए, इस तरह की। और कास्ट तो सबसे बड़ा जो मतलब हमारे आत्मा पे शाप मैं कहती हूँ है, वो सबसे बड़ी इनइक्वालिटी का जरिया बना है। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए एक मॉडर्न मतलब टाइम्स में जाने के लिए जिन सब लोगों ने मिल के हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में जो शामिल हुए थे, शरीक हुए थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग, उन सब का जो मिल के
कॉन्स्टिट्यूशन बना वो रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह का देश हम चाहते हैं। हम चाहते तो उस टाइम पे जिस तरह से दंगे करवाए गए थे पार्टीशन के टाइम पे, हम भी कम्युनल रास्ते पे जा सकते थे। लेकिन एक मतलब ये रियली हैट्स ऑफ टू द पीपल हु हैव framed the constitution, Baba Bhimrao Ambedkar and all the others who contributed, Jawaharlal Nehru and all the other freedom struggle people in the freedom struggle, Maulana Azad, कि उन्होंने हमको एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एक देश तो जिसमें सब बराबर होंगे। तो उसके हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी ऐसी बनी कि अगर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो हम ये एजुकेशन दिलवा नहीं सकते अपने गरीबों को, अपने नागरिकों को। और स्टेट का पैसा जनता का पैसा होता है। आई वाज शॉक्ड, हम जब आर्ग्यू कर रहे थे किसी प्रोफेसर से तो वो कहते थे लेकिन टैक्स के पैसे से क्यों सब लोगों को पढ़ाया जाए। मैंने कहा मैडम आपने कभी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में सुना है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने कहा साइंस पढ़ने से ये होता, हमारी कंपार्टमेंटलाइज्ड जो एजुकेशन है, आपको पता ही नहीं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है, कि आम जनता जो टैक्स देती है तेल, साबुन, पानी, पेट्रोल कुछ भी खरीदने के लिए, आम जनता देती है, गरीब जनता देती है। वो पैसा 65% से ज्यादा रेवेन्यू आपका सरकार का, पहले तो 85 होता था बट थोड़ा सा घटा है, लेकिन वो पैसा उनके फायदे के लिए कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? वो पैसा उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कम से कम आप हेल्थ सिस्टम ठीक कीजिए, कम से कम आप एजुकेशन सिस्टम ऐसा कीजिए कि हर बच्चा पढ़ पाए। अफोर्डेबल क्या, फ्री होना चाहिए। फिनलैंड जैसे देश में टोटली फ्री है, सरकार पूरा खर्चा उठाती है केजी से पीएचडी तक, और बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। लड़ लड़ के 1970s में इन्होंने हासिल किया कि दोहरी एजुकेशन सिस्टम नहीं चलेगी, नहीं चल सकती। तब उन्होंने तय किया कि एक भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो मैं इस हिस्ट्री में नहीं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से जो वर्ल्ड कैपिटल है वो हावी हो गया, हमारे देश में सिर्फ नहीं हर जगह हावी हो गया कि हेल्थ और एजुकेशन दो जो हमारे पास मुनाफा कमाने के जरिए हैं उन पर कब्जा करो। और तरह तरह से होता गया। कभी जब ज्यादा समय होगा, कोई वर्कशॉप होगी तो मैं उसमें जानना चाहूंगी कैसे कैसे ये हुआ। यूरोप में रेजिस्टेंस हुई जब स्टूडेंट्स और टीचर्स, और खासतौर से स्टूडेंट्स, सड़कों पे थे लाखों लाखों स्टूडेंट्स कि हम फीस नहीं बढ़ने देंगे, हम प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। तब जाके वहां पे पब्लिक फंडेड एजुकेशन बचा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अभी मैंने बताया ना अंधेरी सुरंग। हम लोग सोच रहे थे कि जब आपदा में सब लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अब बीच में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस करने का क्या तुक है। अब 2020 में देखिए कितना बुरा हाल चल रहा था कि सब लोग, मतलब लॉकडाउन था, लाइवलीहुड खत्म हो गई थी, हेल्थ खराब हो रही थी, पीपल वर डाइंग। और 1 मई 2020 में प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट आता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आत्मा ऑनलाइन एजुकेशन है। हमने कहा क्या, why are we talking about it right now, and how has it just become the atma? How is the online education atma कैसे बन गया? जो 2019 में ड्राफ्ट आया था, पहले कई ड्राफ्ट आए, I don't want to talk about all of those। 2019 में इलेक्शन जीतने के बाद इनकी हिम्मत हुई एक ड्राफ्ट लाइन 448 पेजेस का, उसका हमने जबरदस्त क्रिटिक किया। एक बार भी इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस को बातचीत के लिए नहीं बुलाया। पिछली पॉलिसीज में हमेशा एक लंबी बहस चली थी पूरे देश में, तब जाके पॉलिसी बनी थी। हालांकि हमेशा हम लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं होते थे। 1986 वी वर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि उस टाइम पे ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हो चुका था। एक प्रेशर था वर्ल्ड कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, इन सब चीजों का। लेकिन इस बार तो बिल्कुल जरा सा भी कुछ नहीं, और आपदा के बीच में लोग दूसरी चीजों से जूझ रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर की ये पहले स्टेटमेंट पहले था, हमारे कान खड़े हो गए। उसके एक हफ्ते बाद अब जितने भी ऑनलाइन बिजनेस जर्नल्स देखेंगे उसमें ये आ रहा था कि इतने करोड़, इतने बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं सुंदर पिचाई, रिलायंस, ऑनलाइन एजुकेशन में। तब हमें समझ आया, अच्छा वो ये बिजनेस वेंचर है, इसको समझ लीजिए साथियों, ये बिजनेस वेंचर है। वो दो लोग, मतलब जैसे दो लोग बेच रहे हैं, दो लोग खरीद रहे हैं, तो वो जो खरीदने वाले लोग हैं उन दो लोगों के लिए ये सब किया जा रहा है। आप इनको किसान कानूनों से अलग करके मत देखिए, ये एकदम वही चीज है, और ये आपकी जान ले रहा है, क्योंकि आपके बच्चों के सपने छीन रहा है। मैं भी नहीं सोच सकती कि अगर मुझे घर में पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, तो यूनिवर्सिटी क्यों किस लिए होती है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, जो 2 साल हम लोग को ऑनलाइन की आदत डाल के सोच रहे हैं कि डाल, लेकिन स्टूडेंट्स भी इतने बेवकूफ नहीं, और उनके माँ बाप तो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। माँ बाप समझते हैं कि बच्चों का क्या हाल हो गया है।
बच्चे कह भी लें कि हमें ऑनलाइन एग्जाम करना है, बाबा कहेंगे कभी नहीं, पढ़ो, कान पकड़ के पढ़वाइए इनको, डांट के पढ़वाइए, क्लास में बुलाइए, डांटिए, मारिए, कुछ भी कीजिए। ये पेरेंट्स कह रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग डाउन डाउन, कोई ऑनलाइन टीचिंग नहीं होगी। कितने लोग पढ़ पाए, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, घर में क्या हालात है, महिलाओं के साथ क्या होता है, घर में पढ़ सकता है कोई? आपका क्लासरूम एक स्पेस होता है जहाँ पे बराबरी के साथ बैठते हैं पढ़ते हैं और आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमारी जो डाइवर्सिटी है आप फर्स्ट हैंड उसको एक्सपीरियंस करते हैं। ये किताब से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं, हर किस्म के बच्चे आते हैं। हाँ, एक रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है कुछ कम्युनिटीज का, वो हमें देखना है क्यों हुआ है। हमारे सच्चर साहब ने कहा था, जस्टिस सच्चर ने, कि रिजर्वेशन पॉलिसी मुसलमानों के लिए भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन चाहे वो स्कूल में हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो, चाहे अच्छे जॉब्स में हो, वो एससी के बराबर ना के बराबर है। उनका भी बहुत कम है, आपका भी बहुत कम है। तो अगर उनके लिए रिजर्वेशन हो रहा है, वो कभी किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो हमारा जो एक डाइवर्सिटी जिस तरह से होनी चाहिए उतनी नहीं है, फिर भी काफी हद तक एक डाइवर्सिटी जो है आप एक दूसरे से सीखते हैं। टीचिंग कम्युनिटी में भी अगर वो डाइवर्सिटी आ जाए जो पूरी तरह से नहीं आई है, तो बहुत कुछ हम एक दूसरे से ही सीख लेते हैं जो किताबों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए अब ये क्या कानून लाए, एनईपी में जो सार है, बाकी सब जो रेटरिक है भूल जाओ। हाँ, एंशिएंट इंडिया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अरे क्रिटिकली देखो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको सवाल पूछने दो हमें कि क्या बढ़िया था, क्या बढ़िया नहीं था, क्या एकलव्य का अंगूठा काटा गया बढ़िया था, क्या शूद्रों के साथ जो विवाह हुआ वो बढ़िया था, क्या चीजें बढ़िया थी, क्या बढ़िया नहीं थी। किन चीजों को हमें छोड़ना है अगर आगे बढ़ना है तो क्रिटिकली देखेंगे तो ठीक है, लेकिन ये अनक्रिटिकली कहते हैं सब कुछ बहुत बढ़िया था। आप आंख बंद करके कहो उसकी पूजा आरती उतारो, कहोगे बस हमें वैसे ही करना है, ये तो नॉनसेंस है। ये यूनिवर्सिटीज का काम नहीं है। और पूरा मिडिवल पीरियड गायब कर दिया है, पूरी हिस्ट्री को ट्विस्ट कर रहे हैं। हमें मालूम है, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहते। मैं मेन चीज पे आती हूँ। मेन क्या है इनका? ये सब दिखावा है, अब उसमें लग जाओगे। मेन चीज ये है जो 3 कानून, सबसे पहले एक एबीसी रेगुलेशन आया है, आप शॉक्ड होंगे। एबीसी का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट हो गया। एबीसी बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट का एक वर्चुअल अकाउंट होगा, एकेडमिक अकाउंट, एक बैंक होगा, सो कॉल्ड बैंक। उसमें वो कहीं से भी कोई कॉस्ट करके उसमें पार्क कर सकता है, जमा कर सकता है। तो आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को एग्जाम्पल ज्वाइन करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी, तो जितने कोर्सेज हैं हमारे, सपोज 24 कोर्सेज, तो मतलब एक कोर्स में 24 पेपर है, तो वो स्टूडेंट उस 24 पेपर में से 12 पेपर बाहर की यूनिवर्सिटी से कर सकता है। या वो प्री प्रिपेयर्ड मॉड्यूल्स होते हैं मूक्स नाम के, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, वो प्री रिकॉर्ड, वो कर सकता है। स्टूडेंट्स को आपने चटा दिया ये शहद या जो भी कहो उसको कि ऑनलाइन कर लेंगे, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स वो अडॉप्ट करें, और मैं और वजह बताऊंगी कि वो करना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली 100% ही करें। 50% आप अपना कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी से नहीं, बाहर से, इधर से एक कोर्स कर लिया, उधर से वो कोर्स कर लिया, ऑनलाइन कर। सिर्फ जो बचे 12 कोर्सेज हमारे लिए, उनमें से हम कितना सिखा लेंगे? हमें दूसरे 12 पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये कोई डिस्टेंस लर्निंग का भी फॉर्मूला नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है जो रेगुलर सिस्टम होता है। ओपन स्कूल की बात अलग है, हम ओपन स्कूल नहीं, हम फॉर्मल एजुकेशन को खत्म थोड़ी करना है आपको। तो कहीं भी नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग में भी कॉस्ट टीचर बनाता है इग्नू के, वो हर जगह बेचता है, वहां पे वो ह्यूमन बींग्स डिलीवर करते हैं, छुट्टियों में क्लास भी होती है। लेकिन इसमें तो आप टोटली एक स्क्रीन के सामने बैठ के सीख जाएंगे। हमने देख लिया 2 साल में हमने कितना सीखा। तो आप हमेशा हमेशा के लिए एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं एबीसी रेगुलेशन के द्वारा, और इसी के साथ ये मूक्स रेगुलेशन आया है। इसी के साथ एक 3rd रेगुलेशन आया जिसमें ब्लेंडेड लर्निंग, जो बचा कुचा टीचर पढ़ाएगा यूनिवर्सिटी में, उसमें भी 40% आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स बना के स्टूडेंट्स को देने पड़ेंगे। बाकी काम आप मेंटरिंग, करेक्टिंग, ये सब करेगा। ये जो हम लोग घिस घिस के स्टूडेंट्स को, हायर एजुकेशन कोई मजाक नहीं होता है, कैसे फाउंडेशंस ले करते हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उनकी बढ़ती है, तब वो जाके सीखने के, समझने के, सवाल पूछने के पोजीशन में होते हैं। वो सब गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा? तो मजाक होगा। तो आप ना तो
इंस्टीट्यूशन से बिलोंगिंग की आपको होगी ऐसा, ना एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा, ना टीचर से इंटरेक्शन होगा, पूरा ह्यूमन कंटेंट आपने खत्म कर दिया। आप कहते हैं ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट खुद अपना कोर्स बनाएगा। चलो अगली बार ये कहेंगे कि आप जाके दवाई भी अपनी खुद लिख लो, आप आत्मनिर्भर हो जाओ, डॉक्टर की क्या जरूरत है। आप इधर से इंटरनेट से देख लो कि ये दवाई ठीक रहेगी, वो देख लो वहां से वो दवाई ठीक रहेगी, कोई क्वैक बताएगा, कोई आयुष बताएगा, आप ये जोड़ के कहो कि मैं से हमें ये दवाइयाँ दे दो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये कोई बाबा रामदेव की दुकान थोड़ी है जहाँ पे आप कुछ भी ले लोगे। तो ये मजाक जो बनाया है इन्होंने साइंस का, एजुकेशन का, हर चीज का मजाक, और ये अंधभक्ति, मतलब जो कहते हैं सुपरस्टिशन, वो अंधविश्वासों को प्रमोट किया जा रहा है। बिकॉज इट सूट्स देम। अपने बच्चों को जो लीडर हैं वो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज भेजते हैं, और आम जनता के बच्चों को कहते हैं कि हाथ में तलवार ले लीजिए, त्रिशूल ले लीजिए, और ये लव जिहाद की लड़ाई में लग जाइए, काऊ जिहाद की लड़ाई में लग जाइए, मुसलमानों के खिलाफ हिंदुइज्म खतरे में है। अरे कौन सी हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं? हिंदुइज्म डज नॉट टीच यू दिस, ये राक्षस लोग हैं। हमारी गीता में लिखा है चैप्टर 16 में कि जो राक्षस है वो ऐसे पाखंडी रिचुअल्स को अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि ईश्वर हर इंसान में बराबर से मौजूद है, बराबर से। द वर्ड बराबर इज कम एवरीवेयर। ये नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़ें, कुछ भी कह देंगे, अगर लोग पढ़ेंगे नहीं तो उनको क्या मालूम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, मान लेंगे। तो ये हो रहा है, ये सच्चाई है। तो सबसे पहले 3 रेगुलेशन है, फिर 4 साल का जबरदस्ती कोर्स। अरे भैया 3 साल के लिए तो पैसे छोड़े नहीं आपने हमारे पास, लाइवलीहुड नहीं हमारी, 4 साल तक कैसे पढ़ाएंगे? बाहर से स्टूडेंट्स आएंगे, कहाँ रहेंगे, कितना चार्ज होता है पीजी में आपको मालूम है? तो ये 4 साल का, और 4 साल में क्या एक्स्ट्रा करा रहे हैं हम? 3 साल में जो हम करते हैं उसी को खींच के 4 साल कर रहे हैं, उससे भी कम। इसके बाद इन्होंने एक नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क, एक तो हर चीज इतने लंबे लंबे वर्ड्स हैं, कुछ समझ नहीं आता है। मैं सोचती हूँ कभी कभी क्या शशि थरूर ने लिखा है मुझे पूछना पड़ेगा, आपने तो नहीं कुछ लिखा, वो समझ नहीं आ रहा है। और हर चीज का फिर अब्रीविएशन, फिर देखो बीच में कि ये NCHEQF है क्या चीज, जो भी है। तो वो उसमें क्या है कि अभी आपका जो 4 साल का फ्रेमवर्क है उसमें इतने क्रेडिट होंगे। मैं आपको बता दूं कि मेन सब्जेक्ट का जो क्रेडिट होता है, जितने घंटे उसको मिलते हैं, टोटल में से 75% से कम हमने कभी नहीं दिया मेन सब्जेक्ट को। मेन सब्जेक्ट तो आप पढ़ते हैं, जैसे ऑनर्स है हमारा, उन्होंने 45.5% कर दिया उसको। बाकी क्या पढ़ेंगे? वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू कोई सिखाई जाती है इसे? अब मैं कह दूंगी कि ये अच्छा करो, वो बुरा है, ऐसे कोई सीखता है? वैल्यू आती है सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ने से, ताकि आप सवाल पूछना सीखो, क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे बुद्धा ने कहा था, by your own thinking and your conviction you come to a decision, not by the glamour of a philosophical view or an authority or a political leader or anybody else. आप खुद जांचिए उसको, परखिए कि ये दुनिया के लिए अच्छा होगा कि नहीं, तब आप तय कीजिए कि ये मेरी पोजीशन होनी चाहिए। ये कलमा सूत्र नाम का सूत्र है जो गौतम बुद्ध का बहुत फेमस है। तो इसमें आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने पूरा जो उसकी जो एजुकेशन का जो हार्ट एंड सोल है वो तो निकाल ही दिया। अब डिग्री बांटने का काम सिर्फ हमारा हो जाएगा, वो एजुकेशन नहीं है, वो तालीम नहीं है। आप अपना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं हो रहा, समाज को बदलने का आपका कोई इरादा नहीं है, आप नागरिक कैसे किस तरह के बनेंगे? और आपकी एजुकेशन का स्तर इतना घटिया हो जाएगा कि आप सिर्फ चीप जो लेबर है, मतलब बहुत ही चीप जॉब जो आपको मल्टीनेशनल में लो लेवल की मिलेंगी, वही आप करने के लायक रहेंगे। आप बहस भी नहीं कर पाएंगे कि मुझे इतनी तनख्वाह कम क्यों मिल रही है, मेरा 12 घंटे का जॉब क्यों है, मुझे बोनस क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे सर्विसेज मेरी टर्मिनेट क्यों हो जा रही है। ये सब करने के आप सिचुएशन में नहीं होंगे, क्योंकि आपकी वो समझ ही नहीं है, ना आपकी उस तरह के क्वालिफिकेशन होंगे। ये स्किल डेवलपमेंट भी एक बेवकूफ़ी की चीज़ है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट आप ठीक है अलग से कीजिए, लेकिन ज़रा खिचड़ी बना दिया है। आपको वैल्यू एजुकेशन करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, और बाकी और सब कुछ पढ़ना है, और मेन सब्जेक्ट 45% से कम है। तो पूरा डाइल्यूशन का प्लान है। और ये 4 साल करने के बाद कहते हैं 1 साल में एमए आपको कर लेंगे। 1 साल में क्या आप एमए करेंगे? आप वो एमए का जो दूसरे साल का कंटेंट है आपने चौथे साल में तो डाला ही नहीं, तो उसको वहां भी डाइल्यूशन है। फिर कहते हैं कि आप पीएचडी कर लेंगे डायरेक्टली। तो ये तो सारा मजाक है। एमफिल आपने काट दिया, जो मेजॉरिटी लोग स्पेशली ह्यूमैनिटीज में एमफिल एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था रिसर्च डिग्री हासिल करने का और जल्दी से नौकरी पाने का, आपने वो भी खत्म कर दिया। बस एमफिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम कहते हैं कोई लॉजिक नहीं है।
4 साल क्यों होगा हम कहते हैं। और एक और चीज क्या कहते हैं, एक और चीज कहते हैं कि अब से कोई एफिलिएटिंग सिस्टम नहीं होगी, ये इनका मास्टर स्ट्रोक है। ना रहेगी यूनियन, ना बचेगा बांसुरी। यूनियन को खत्म है। पूरे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के टीचर यूनियन वगैरह हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे से स्ट्रेंथ पाते हैं, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, उनको ही खत्म कर दो। हमारी यूनिवर्सिटी में 80 कॉलेज है, आप उन सबको अलग अलग यूनिट्स बना के ईच कॉलेज कैन गिव डिग्री और ईच कॉलेज कैन डिसाइड सर्विस कंडीशन। हर कॉलेज तय करेगा, उसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा, उसमें टीचर का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ये लिखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डेमोक्रेसी देश के लिए बढ़िया है और यूनिवर्सिटी के लिए खराब है। पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये आप मैनेजमेंट स्टाइल चलाओगे इसको और मेरिट को रिवॉर्ड करोगे। मेरिट कौन तय करेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन होगा? 2/3 बाहर के लोग होंगे। अभी हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ प्रोफेसर होते हैं। हाँ, हालांकि हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि वो चमचागिरी करते हैं वाइस चांसलर की, और लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। अब तो वो भी हट जाएंगे कि कहीं कोई हिम्मत ना दिखा दे, तो बाहर के लोग होंगे। बाहर के कौन लोग होंगे? 2/3 बाहर के जो लोग होंगे, एक होंगे कॉर्पोरेट फंडर्स जो फंड करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी को, उनके नुमाइंदे आएंगे डायरेक्टली आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो वो तय करेंगे कितनी फीस लेनी है स्टूडेंट से, ताकि हम अपना सारा जो भी हमको इनपुट है हम वापस ले पाए, प्रॉफिट बना पाए। तो कॉर्पोरेट फंडर्स होंगे, साथ में पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स होंगे। कौन तय करेगा कि कौन पब्लिक इंटेलेक्चुअल है? और तो कोई बॉडी है नहीं, तो वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तय करेगा। हमको मालूम है किनको ये लोग इंटेलेक्चुअल समझते हैं। जिस तरह से पूरी बॉडीज को इन्फिल्ट्रेट कर दिया, आईएएस तक को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं लैटरल एंट्री करके, तो हमको मालूम है कि आरएसएस के लोग भेजे जाएंगे हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के गवर्निंग बॉडी में बैठने के लिए, ताकि वो आइडियोलॉजिकल एजेंडा अपना वहां पे परस्यू करें कि कोर्स में क्या आएगा। फ्रीडम स्ट्रगल हटा दो, कोई फायदा नहीं है। अभी भी हटाया हुआ है। 9th to 12th के जो कोर्स में इन्होंने सिटीजनशिप हटा दी, फ्रीडम स्ट्रगल हटाई हुई है, इसमें इन्होंने पेजेंट स्ट्रगल हटा दिए, इसमें इन्होंने इवन इंफेक्शियस डिजीजेस तक हटा दिया, क्लाइमेट चेंज हटा दिया। क्यों? नहीं चाहते हैं कि आप लोग ये सब चीजें समझे, स्टूडेंट्स ये बातें समझे। एंटी सीए मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और जो क्लाइमेट के मामले में जिस तरह से दनादन इनको मिलते जा रहे हैं अप्रूवल्स, सारी पूरी इन्वायरमेंट को खत्म करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को अमेंड करके सारा कुछ खत्म कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए, प्रॉफिटियरिंग के लिए। तब कोई समझ ही नहीं होगी स्टूडेंट्स में, तो कौन अपोज करेगा? आगे चल के भी हम लोग तो सब रिटायर कर जाएंगे, एक जिंदगी होती है एक लिमिट, लेकिन जो यंग जनरेशन है उसको अगर आप इन सब चीजों से महरूम रखेंगे, आप उनको नहीं सीखने देंगे, तो कैसे वो लोग आपसे आर्ग्यू कर पाएंगे? कि बहुत बड़ा गेम प्लान है साथियों, इसलिए हमें इसके खिलाफ लड़ना है। दूसरा कि आपका जो दूसरा प्लान है कि क्योंकि आपको प्रॉफिट बनाना है, टीचर्स की तादाद कम करनी है। आप कहते हैं कि स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप कह रहे हैं टीचर्स को तो हटा ही दो, कोई जरूरत ही नहीं है टीचर्स की। क्योंकि जब आप डिजिटल कर देंगे सारा, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाह रही थी आपको, जो पहला पेज है, जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान आया है यूजीसी से 28 जनवरी को, हमने कहा 11 फरवरी तक जवाब दे दो, फीडबैक। मतलब 260 पेज या कुछ है, अभी पढ़ के दे दो जवाब, और वो जवाब पूरे डाल में जाता है। तो इसमें कहते हैं सबसे ज्यादा इसेंशियल इस पूरे प्लान के लिए, the essential component, page 1, the essential components of an infrastructure capable of supporting transformational learning experiences include the following. Number 1, ubiquitous connectivity, persistent access to high speed internet in and out of school. ये तो यही फेल हो गया, ये कहां से मिलेगा आपको? persistent access to high speed internet in and out of school. अरे पहले वो तय कर, वो लाओ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। और दूसरी तीसरी चीजें तो वही हैं, पावरफुल लर्निंग डिवाइसेस, एक्सेस टू मोबाइल डिवाइसेस दैट कनेक्ट लर्नर्स एंड एजुकेट, मतलब पूरा डिजिटल के बारे में है, हाई क्वालिटी डिजिटल लर्निंग कंटेंट। यही मतलब होल ऑफ एजुकेशन इज ओनली डिजिटल लर्निंग। ये आपकी एनईपी का सार है, ये आपकी एनईपी का थ्रस्ट है, और कुछ है ही नहीं। बजट में भी आप सुनते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और जो कमियां हैं आप टीवी पे लगा देंगे आपके लिए लेक्चर्स, उससे आप सीख लेंगे। ये क्या मजाक हो रहा है? ये भद्दा मजाक हो रहा है। और ये बात हमारे देश के लोग समझते हैं, क्योंकि 2 साल देखिए आपने हमको जो हमारे ऊपर गुजरी है, उससे हमारी समझ भी बन गई है। तो अगर आप ये बात जनता के सामने ले जाएंगे, लड़ना है, लेकिन अकेले नहीं लड़ना है, मिल के लड़ना है। सिर्फ मुस्लिम होते हुए नहीं लड़ना है, सिर्फ स्टूडेंट्स होते हुए नहीं लड़ना है।
लड़ना है, सिर्फ किसान होते हुए नहीं लड़ना है, सिर्फ महिलाएं होते हुए नहीं लड़ना है, हमें सब मिल के लड़ना है, क्योंकि ये जानलेवा पॉलिसी जो है ये हमारे भविष्य को खत्म कर देंगे और हमारे देश को दोबारा से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, अंधकार में ले जा रहे हैं। सड़क पे उतरना पड़ेगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जहां भी आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। इन चीजों को पढ़िए और अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने कॉलेजेस में, जहां भी हो सकता है ये आवाज उठाइए। अगर यंग लोग सड़कों पे निकलेंगे तो ये डरेंगे, इनके घुटने ये बेंड होंगे, दे विल बेंड देयर नीज बिफोर यू। यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ये ताकत आपके हाथों में है, देश की जो लगाम है वो आपके हाथ में है, लेकिन आप इस बात को समझिए और उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए, तभी ये देश बच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, ma'am, for this insightful lecture. You have talked about the dangerous design of national new education policy, and also you have talked about the way out. Way out is only resistance, movement, coming together of the like-minded people to resist such attempts by the government. So thank you so much, ma'am. Next speakers for the next session have come. So we will conclude the session, but before that, I would like to, because organizers have asked me to conclude it as soon as possible. The felicitation will take place. Hello. Here is the end of an amazing informatic session. We are very grateful to you for unveiling the unseen sides of the national education policy. We Muslim Students Federation would like to assure that we extend our wholehearted support for your fight for the rights and welfare of students and teachers. Now, it is the time to give away the token of love to our vibrant panelists. Firstly, we would like to invite Fazid Rahman, Msf Trichy District Secretary, to provide the memento to Nandita Naren, the Assistant Professor, St. Stephen's College, Delhi, former President of Delhi University Teachers Association. Now, we invite Riyaz Nalagal, the National Executive Member from Kerala, to provide the memento to Dr. Aftab Alam, our moderator of this session, and the Assistant Professor of Department of Political Science, Zakir Hussain, Delhi College. Good evening all. It was really a wonderful session and fruitful. Can you please give a good round of applause? Please, please, please be on. Please. Okay. Don't. I want Kerala food. Beef and Parota. Is there anybody to kill me? No. There is no mob lynching here, I think. So, I ate beef and Parota. So, I searched here and there is no beef. So, what can I do? I was really sad. Then Aslam came to me and told, you will get Parota and beef in your land, right? Right? You will get Parota or Ghosh or Parota in your land. Come and have kulcha. Kulcha? Have you heard about kulcha? Yes. What is kulcha? Anybody know? It's roti, right? Roti hai bhai. So I am here. If you want to eat parota and beef, you can go to your home or your land. Or if you want to eat your own food in your area, you can go to home. You came here